I'll Thank you, give sir. a brief introduction. Ramin sir has already joined us. Yeah, Ramin I am sir here. is an assistant professor at again the Delhi NCR campus of SRM University in the Department of Biotech and Microbiology. Before that, he was a FAPES postdoc fellow, which is a very prestigious fellow, and people get it while doing PDF in Brazil. And before that, he was a research associate at the Faridabad Center for Translational Health Science and Technology. He has several big papers, including Nature Communications, and has also patents. While talking to him, I also came to know that he'll soon be getting a big grant. He has been to almost many countries of the world, and I wish him all the best for more. Before that, he did his MSc in biotechnology from the Jawaharlal Nehru University, and I'm proud to say that he is a senior from my own college, BN College, where he did his BSc in biotechnology. And after his UG and PG degree, he did his PhD from the ICGB Center in New Delhi, which is a reputed center for genetic engineering and biotechnology. Yeah. Yeah, so it's my really very, very great pleasure to have here. I am very much thankful for my very great friend Sanjeev for this initiative. He all the time, from very beginning, he has some creativity in his mind. Always he is very creative, and this quality that he has now I can see that still he is doing, and now he doing this activity to help our young generation. So thank you so much, Sanjeev ji. Thank you so much, Dr. Piyush, for organizing, connecting this, and a very nice introduction about me. You are sitting in the US, and you are organizing the content in India. It itself a very great thing. So thank you so much, Dr. Piyush. I can see here there is one of my friend, Dr. Deepak is here. Deepak? Deepak is here? No. Okay. So Deepak is also here. I can see there are Lakshmi Narayan Misra ji here. So what I would like to say that this is really a very great and interactive platform where we can meet our own people. So we can say thanks to this online internet connection that this is the platform where we have time to meet each other, and at least we know that, like yesterday when I was talking with Dr. Piyush, I came to know that we are from the same college, and okay, seniors and junior no matter, but from the same family. Okay, so that's happening due to this initiative that Sanjeev has taken it. So what I would like to say to our students who are here, so mostly I know that in our anywhere, either when you are in undergraduate or you are just starting your career, because we start our career having 10 plus 2. So what we do, we have mathematics or we have the biology. So because this is the culture of every family, every home, that when we start studying, then our purpose is to study to have a good life, to have recognition in the society. Very good. That's why in our society, people consider from very beginning that, okay, my son, my daughter, you have to be a doctor or you have to be engineer, or not, you have to be IS. Okay. So there are certain terminology that is very common in everywhere that everyone follow. Okay, this is the only way. So this is not like a unique, or this is not like any common thing. This is very how to say regular way in our society, that people only listen about doctors or the engineers or the IAS or this.
but nobody know about the biotechnology, basically in our time. So what I would like to say, this was my career when I have started. So this was in 1999 to 2002. So almost 20 years back. Okay. So 20 years back, I was here in BN College. I did my biotechnology from there, BSc degree. I remember that when I was having my 10 plus 2, my dream was, everyone's dream was to be a doctor. Okay, but the competition was very tough. It was very difficult, and we don't have time to wait for 2 years or 3 years. Then we need to find out any alternate. What is the alternate way? Then we came to know in the newspaper that there is an advertisement, and that advertisement was for BSc in biotechnology. And then we have applied for BSc biotechnology, and we have written the test. We qualified, and we entered. There was a first day in the biotechnology, our question was, what is the scope of biotechnology? What does it mean by biotechnology? Why I have selected the biotechnology? Whether this is a better course than doctors? What is the salary structure of biotechnology? What is the social prospect of the biotechnology? These are the questions that had in our mind during that time. But for your kind information, when we have started our career during our BSc Biotechnology, I remember that we have Sanjeev was our classmate, Amarendra Ajay was our classmate. So all were classmates. We were not knowing exactly that how to study. Believe me, because basically our education was not so good to study the principles of biochemistry like Lellinger. Okay, so Lellinger is one of the book that is very difficult to study about the biochemistry, or Bruce Albert Cell or Darnell. Very difficult to understand. But what we were doing, we made the group 3-4 people. आपस में मिल के बात करना, आपस में मिल के डिस्कस करना, और हम लोग उसको स्टडी बहुत हार्ड स्टडी करते थे, जिसके कारण एक समय आया था कि जिस समय हम लोग बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर जब हम लोग पढ़ते थे, उस समय लगता था कि एक पेज 2 पेज पढ़ने में हमको 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में पढ़ने के बाद, एक साथ डिस्कशन करने के बाद एक ऐसा समय आया कि वो लेनिंजर की जो आपको बुक उतनी मोटी दिखती है, उसको पढ़ने में आई ओनली टेक 3 days. दिस इज माय हैबिट. If I have the Leninger, I can read in 3 days. So you can imagine there during that was my time during my undergraduate. So when I was studying, it was taking so much time, but just due to the practice with the friends, just to the determination, there was a time that I was able to read in 3 days. Okay. उसके बाद बेसिक क्वेश्चन क्या था, हम लोग पढ़ते थे, जितने भी लोग पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन यही रहता था कि आगे चल के इसके स्कोप क्या है, इसके सैलरी क्या है, हम क्या करेंगे. लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी भी बताऊंगा, मेरे अंजलि मैम ने चूंकि मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें, शी ऑलरेडी हैड कवर इन हर प्रेजेंटेशन. There are a lot of scope. It's more, if you can study more better, then there is no less respect than any field, including like doctors or engineers. This is a very respectful and very prestigious field that you have chosen or you are going to choose. Another way, I just want to share my experience. Sometimes जो हमारे बच्चे होते हैं वो केवल जॉब के लिए पढ़ते हैं, कभी कभी केवल पढ़ते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, मेरे को क्या सैलरी मिलेगी. आप लोग कुछ ऐसे भी सोचिए कि क्यों नहीं हम बायोटेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे चल के कुछ ऐसा करें कि हम साइंटिस्ट बने. क्यों नहीं आप इनबॉर्न साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप रिसर्च की बातें कीजिए, कुछ रिसर्च करने की बातें सोचिए. एक एग्जांपल है कि हम लोग के समय में हम लोग के साथ देयर वाज वन ऑफ आवर सीनियर, his name was Roshan Kumar. He used to come by bicycle, having the sleeper, and he had all the, like, he was his temperament was the scientist, and he was knowing all the thing, and now he's a scientist in US in dairy. So my thing is that you can imagine that you can start your career from very beginning. आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आगे चल के क्या होगा.
मुझे सैलरी कहाँ मिलेगी, मैं आगे जाके क्या करूंगा। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे भी करेक्टर इन बिल्ड कीजिए कि जिसमें आप ऐसा भी सोचिए कि, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, आपको बीएससी करने हैं, फिर उसके बाद एमएससी करने हैं, एमएससी के बाद स्टेप है। लेकिन अगर शुरू से ही अगर आप डिटरमाइन हो जाएंगे कि ओके, आई हैव टेकन माय कोर्स एज ए बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और व्हाटएवर, this is my course and I have to build my career in this, then you will have all the career on your way and you will have never regret about your career. So in regarding this I will just share, हम लोगों ने यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी किया in 2002. So I completed my biotechnology in BSc degree. Then the same like all students, I was also trying for my master degree. So I was applying, I was giving the competitive test. Then I got admission in biotechnology in JNU. First time when I came to JNU, doing in my biotechnology, there were total 13 students were selected from the India. And I was the first student from like my native place, BN College, that I came from BN College. So that was for me was the proud moment, and for me was the happiest moment. But when I came to JNU, then I was realizing that, okay, the biotechnology, that career that I have started, this career was not like this. There are many things I need to learn. I remember that first time when I was there, we have a get-together meeting. And then I have first meeting with Professor Rakesh Bhatnagar sir. Now he is a Vice Chancellor of Banaras Hindu University. He was our teacher. So there was a meeting with him. I remember that the first time when we enter in his room and he was explaining about what is the biotechnology, what are the career prospects, what you can do. So believe me, for us, we were thinking like, हम लोग कहीं गैलेक्सी में आ गए हैं या क्या है ये। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने एंथ्रैक्स के वैक्सीन बनाए थे, और उनके जो एंथ्रैक्स के जो वैक्सीन बनाए थे उन्होंने कंपनी को ट्रांसफर किया था ड्यूरिंग 2003, और कंपनी ने उनको 2 करोड़ रुपया दिया था। तो हम लोग का माय गॉड, हाउ मच मनी इज इन दिस प्रोफेशन। सो ही इज नाउ एंड ही वाज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड साइंटिस्ट, बट इट वाज ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। आप सोचिए, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी करके उन लोगों ने हम लोगों को इंस्पिरेशन दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीएससी में वी वेर लाइक 19, almost 19, I remember students were there, and everybody got placed in a very good place, including IT Bombay, JNU. Somebody went to IIC Bangalore, Indian Institute of Science Bangalore, that was from BN College. Somebody went to NCBS, National Center for Biological Science Bangalore. So all prestigious institutions, the people from BN College, they have joined. Okay. Then I was doing my MSc in JNU, and I have a very like a 2-year time over there. और 2 साल के समय में मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में I understood what does it mean by biotechnology, how to use this biotechnology, और इसके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है। तो अभी जब मैं जॉब प्रोस्पेक्ट के बारे में ही सोच रहा था कि एमएससी के बाद मैं आगे क्या करूंगा, बीएन कॉलेज से आके और नए नए सब्जेक्ट पढ़ना, नए नए प्रोजेक्ट करना, उसमें एक कैंपस सिलेक्शन आया। एक बाहर के साइंटिस्ट आए फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और यूएसए, एंड ही वाज बेसिकली native from Taiwan, and he came to our university for campus selection to select one good student or 1 or 2 for his lab. And I was fortunate enough that I got selected to go to his lab because I gave my presentation. He asked me several questions about biotechnology. Thanks to BN College, thanks to my teacher, thanks to my friend that I qualified. And I went, first time I went outside India, that was in 2007. जब 2007 में मैं पहली बार बाहर गया तो देखा कि जो मैंने जेएनयू को देखा था, ये तो ताइवान कुछ अलग ही है, और यहाँ की तो पढ़ाई भी अलग है, यहाँ के प्रोस्पेक्ट भी अलग है। एंड आई वाज देयर इन द सेम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड ताइवान बायोटेक्नोलॉजी. I went there and then I got a chance to started doing the experiment, going to the class. And when I was going for a class, due to my foundation, all the time my score in the class was more than 90%.
and I was not studying just due to the foundation in the BN college, and during my initial study, I was one of the top student in that university, in the Chang'an University in Taiwan. So I was there for 2 years. I was doing many research. तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे टॉक को सुन रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जस्ट मेरे कैरियर में ब्रेक थ्रू कब हुआ कि बीएससी किया 3 साल, एमएससी किया 2 साल, ये जस्ट 2 साल के बाद मुझे ब्रेक थ्रू ताइवान में मिल गया। और मैं ताइवान जाके मेरे को सैलरी कितनी मिलती थी, ऑलमोस्ट लाइक 70,000 जस्ट आफ्टर मास्टर दैट टाइम इन 2007, 70,000। और मैं 70,000 फॉर मी वाज मोर देन एनफ। उसके अलावा मुझे फ्री के रूम मिले थे, उसके अलावा मुझे फ्री के बस मिले थे, चलने के लिए मिले थे, फ्री के मेडिकल फैसिलिटी मिले थे, आने जाने के इंडिया के फ्री के मुझे ट्रेवल फेयर मिले थे। ये सब बायोटेक्नोलॉजी की ही तो गिफ्ट है। यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच गिफ्ट आई गॉट ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। आई वाज लिविंग लाइक ए ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ, doing many good research. Okay, so what I try to say आप लोगों को भी कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग केवल अमेरिका की बात जानते हैं, कनाडा की बात जानते हैं, जर्मनी की बातें जानते हैं, you know the France, but there are some other country like Taiwan, Japan, South Korea, New Zealand, Australia. You also need to explore your career over there. There are very good scientists. There are quality of life that you can explore and you can find out for your next career. Even in UK, kitne log like if you are doing your BSc, you don't need to go so long study. What you need to do, if you can qualify for some UK, like in Ireland or in the UK or in the Scotland, then your PhD will be only for 3 years. And that will be integrated master. If you have integrated master, that will be a total 5 years. So what I want to say that always open your eye, keep looking for the possibility. Okay, आप अपने कैरियर के बारे में सोचते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए और देखते भी रहिए और न्यूज देखते रहिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखते रहिए, लोगों से इंटरेक्ट करते रहिए। हम लोग जैसे लोग यहाँ पे हैं जो इस टॉक देने आपके लिए आ रहे हैं, अंजलि मैम है, संजीव है, आप हमसे इंटरेक्ट करके क्वेश्चन पूछते रहिए कि आगे चल के मेरे कैरियर में कैसे बनाऊं, आगे कैसे जाएं। तो फिर मैंने ताइवान में रहने के बाद आई वाज देयर एंड देन अगेन आई केम बैक टू इंडिया in 2009, and then I enrolled in University of Delhi for my PhD, and I was doing my work in ICGB, that is International Center for Genetic Engineering and Biotechnology. So I did my PhD again in biotechnology. So BSc Biotechnology, MSc Biotechnology. Okay, out of MSc Biotechnology, again PhD in Biotechnology. So I was working on nanoparticles. Here I was working on tuberculosis. So I am not going to, आपको ये मैं बताने के लिए नहीं हूँ कि मैं आपके को रिसर्च के बारे में बताऊं। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैरियर में ग्रोथ होती है। अगर आप देखिए बिल्डिंग कैसे चेंज हो रही है, ये बीएन कॉलेज है जहां हम लोगों की कैरियर शुरुआत हुई है। यही पिलर्स है जो आज हम इस पिलर के कारण हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सारे लोग बोल रहे हैं और हम प्राउडली अपने आप को बोल रहे हैं कि आई एम ए प्रोडक्ट फ्रॉम द बीएन कॉलेज एंड आई एम प्राउडली से दैट आई एम ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि सब यही की देन है। तो इसीलिए आप लोग सारे लोगों को ये सीखना चाहिए, यू नीड टू बी एक्नॉलेज फॉर योर एजुकेशन and you need to feel proud whatever you are studying and whatever you are doing. You should not feel never regret. So you can see ये बिल्डिंग कितनी कैसे थी उस समय। आप सोचिए कि हम लोग क्या सोचते होंगे कि ये क्या है, कैसी लाइफ है। फिर ये देखिए इस बिल्डिंग में पहुंच गए, फिर इस बिल्डिंग में पहुंच गए, फिर यहाँ आ गए। Oh, so many changes. So to working in University of Delhi is itself a very prestigious. To working in ICGB like international. All the scientists across the globe, from Italy, from यहाँ हर जगह के लोग रहते हैं। तो आपको ये नहीं लगेगा कि अपने देश में हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही आप इसके अंदर काम करके लगेगा कि आप फॉरेन में काम कर रहे हैं। ओके, और वहां मैंने पीएचडी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से डिग्री मिली। फिर मैं THSTI ज्वाइन किया, दैट इज वन ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Okay, I was there as a research associate.
Okay, and I was working on several salmonella. So मैं अपने काम और patent publication की बात नहीं कर रहा हूँ, but this is one of the opportunity that I got to enter in this building, and I have opportunity to work there. So thanks to the biotechnology, again I need to say. Then from here I have written a project. Okay, and I written a project, and for Latin, because I have applied several university to going outside again, because that time I had completed my PhD. So I wanted to go again in outside India. My purpose was to go outside India to have more knowledge, to have some more publication. Then I have applied. And I remember I got first postdoc offer in Harvard, second postdoc offer I got from NIH. I got offer from several university in US. Okay. Then, but I didn't move. I went to Brazil. I was I went to this place. So I was here in University of Sao Paulo, Department of... Sorry to interrupt, sir. Yes. We don't see any slides moving in case you are showing. Oh, not moving? Yeah, now we can see it. Now it's moving? Yeah. Also, if you put it on the presentation mode, it will be bigger. Okay. So now it's okay? Yes, sir. And my voice is clear or it's breaking? No, voice is clear. The slides are not moving. Okay, thank you, Piyush. Now it's okay, na? Yeah. Yeah. So what I was trying to say that when I had completed my PhD, I wanted to go for postdoc again abroad. Then I had applied several places, but I selected myself, my choice to go in Department of Medicine in University of Sao Paulo. This is the most prestigious university in whole Latin America, not only in Brazil. And my mentor was Professor George Khalil. He is one of the very renowned scientists in Latin America. You can Google in him that how he is and how the scientist is. Professor Idesio Cunha Neto. So he had developed HIV vaccine. He had developed 3-4 vaccine, and he's very renowned scientist. He is for in Latin America, he is equivalent to Nobel Prize. So because that was my choice, I have several options. So what I am trying to say, MSc करने के बाद, PhD करने के बाद, मेरे पास 5-6 ऑप्शन हैं. अब मेरे को सिलेक्ट करना था कि मैं कहाँ जाऊं. मैं अमेरिका नहीं जाके, फ्रांस नहीं जाके, मैं ब्राजील चला गया. और ब्राजील इसलिए गया क्योंकि मेरे पास अपना प्रोजेक्ट था. मैं चाहता था कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करूं, मैं दूसरे के काम नहीं करूं. उसके कारण मैं वहां गया. तो ये मेरे कहने का मकसद ये है आप लोगों को कि इफ यू वर्क हार्ड, if you have determination, if you don't have regret of your education, you will get everything. So मेरे पास 5 ऑप्शन थे. मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन मैं गया. तो जब लोग पूछते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, no, the job will come near to you. You need to select where you want to go. Okay. Then I was there. I was working here as a postdoc. Fantastic job. 4 years. I work on Trypanosoma cruzi. Now I have one my PhD student over there. We are continuing our work there. Okay, and these are just my mentor. So you can see he was my, because in MSc in the last semester you used to have 1 year, that is your research training. I did during my MSc I did my training under Professor Santoskar. So Professor Santoskar was a student of Sidney Brenner, and he was working in the lab of Watson and Crick. So Watson and Crick, you remember that DNA structure, okay? So he was like scientist like this. You can imagine that he is a very great scientist in India. He is one of the pioneer of immunology in India. So I have opportunity to be trained under him. I am not going to say about how our association with him, how was the time during the MSc career. So I have done my MSc under him. Then you can see, I will just give he was in Taiwan, okay? Dr. Ching Taiwan, he was my boss. So he was a trained scientist in Johns Hopkins University in US, but he had trained me for 2 years. Then Dr. Amit Awasthi, he is the highly cited immunologist of the country this time.
So he is my another mentor from THSTI. Then I did my PhD, Dr. Pon Sharma from ICG. Then I already shown that Professor George Khalil. Now he is in the Harvard because he was in the Brazil, but now he moved to Harvard last year. And it is Kunaneta because he discovered the HIV vaccine. So what I try to say that आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जैसे जैसे आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़िए और पढ़िए ऐसे लगा के जिसको बोलते हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो we used to study like 20 hours in a day. एवरी डे, नॉट लाइक टुमारो नहीं पढ़ेंगे आज पढ़ लिए, नहीं, रोज पढ़ना है। और हम लोग को आज जो भी सेटिस्फेक्शन है अपने कैरियर को लेके या जो भी ये अच्छी अच्छी जो फोटो दिखाई दे रही है, इसका एक ही रीजन है कि हार्ड वर्क। इसलिए हार्ड वर्क नेवर गो अनपेएबल। सो आप जो भी हैं आप मन लगा के पढ़िए, ज्यादा चिंता मत कीजिए, कैरियर आपके पास खुद आएगी। लेकिन जो रास्ते हैं सीधे रास्ते पे चलिए, शॉर्टकट रास्ते नहीं। जो रास्ते, अब क्वेश्चन होती है कि शॉर्टकट रास्ते और क्या रास्ते, मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा। अब कैरियर, ओके, यू कैन गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू कैन गो फॉर क्वालिटी, यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन गो फॉर क्लिनिकल रिसर्च, यू कैन गो फॉर, यस, बढ़ नहीं रहा आपका स्लाइड, अभी नहीं बढ़ रहा है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। हाँ, इसको आप प्रेजेंटेशन मोड में कर लीजिए ना, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है ना? नहीं, प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है यार, ये तो प्रेजेंटेशन मोड में फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन में कर दीजिए। या आपको, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जा रहा है कि नहीं आगे, क्योंकि वो जा नहीं रहा है बेसिकली। अभी जैसे आपको तो मतलब आगे हुआ, हो रहा है नहीं, आगे नहीं मूव कर रहा है। स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, स्लाइड शो मोड में। तो स्लाइड शो पे तो कर रहा हूं, नहीं है, नहीं, ये क्या हो रहा है? वहाँ नीचे में सर, हाँ नीचे में, हाँ यही वाला, ठीक, हाँ नहीं ठीक है, अभी भी नहीं है। तो कैसे करें? मतलब क्या हो रहा है, स्लाइड मूव नहीं कर रहे हैं? स्लाइड मूव नहीं हो पा रहा है, हाँ, तो आपको लाइक अटेंटिव होकर के उसको मूव करना पड़ेगा, जैसे अभी आप किए। ठीक है, तो हाँ, एक बार मूव हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा, नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं। तो मेरे स्लाइड दिख रहे हैं कि नहीं? स्लाइड दिख रहे हैं, हाँ, स्लाइड हाँ। बट वो मूव नहीं हो रहा है, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं ना अभी, तो नहीं, हाँ, अभी नहीं जा रहा, अभी आया, हाँ अभी हो रहा क्या है, है? हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो आप अभी देख पा रहे हैं ना? हाँ, दिखाई दे रहा है सर, वो मूव के समय जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन वो स्लाइड आता नहीं है तो पता नहीं चल पाता फिर। Okay, sorry for this inconvenience. No problem. Okay, so now my slide is visible. Yes sir. Can I move? Yeah. So what I was saying, you can go to clinical research, you can go to the government policy making, software engineering, food animal, sales, technical support, business management, project management. There are many plenty of careers. If you can just include some slides of Anjali ma'am, then you can see how many job prospect you have. So job prospect in the sense, what I will say, whatever you have, like if you are doing BSc or if you are doing the MSc, if you are having the BSc in biotechnology, then you first need to determine yourself कि अगर मैं बीएससी में हूं तो मुझे इस कोर्स को ही, आपको माइंड इधर उधर नहीं, लोग क्या करते हैं डेविएट करने लगते हैं, लगता है कि नहीं ये करियर अच्छी है, वो करियर अच्छी है, यहाँ चले जाएं, नहीं, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बीएससी तक अपना फाउंडेशन बायोटेक्नोलॉजी में ही बनाया है। तो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में ही बनाया है तो फिर अगर आप दूसरे करियर में अगर आप स्विच करिएगा फिर वो भी सीखना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए अगर आप बीएससी के करियर में हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत मिलेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Yes, biotechnology or whatever professional degree that you are doing, one job is a biomedical engineer. And from the government prospect, it is showing in 2000 until 2026, it will be increase of 7% in terms of money, salary. So salary I am talking about whole world. And जो सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये सैलरी की बात कर रहा हूँ यूएस डॉलर में। तो जो भी सैलरी है वो यूएस डॉलर में 7% बढ़ जाएगी। कब तक? 2026 तक, माने आफ्टर 6 ईयर। इसका मतलब कि बायोमेडिकल इंजीनियर का जो प्रोस्पेक्ट है आफ्टर द बायोटेक्नोलॉजी, इसका ग्रोथ है। सो अब नाउ क्वेश्चन इज कि आप बायोटेक्नोलॉजी के बाद बायोमेडिकल इंजीनियर में आप लोग क्या करेंगे? उस करियर में आपको ये बता दें कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी दोनों मिला के हम लोग उसको डिवाइस में, मेडिकल सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल ऑर्गन, डायग्नोस्टिक मशीन में यूज होता है। ये एक है। दूसरा बायोकेमिस्ट, सब लोग बीएससी में या पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तो सारे लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स जानते हैं। ऐसा अनुमान है, इट हैज बीन assumed that in 2026 there will be increase of 11%. Okay, so biochemistry due to from biotechnology it is taking a boom. So you can whatever you are studying in biochemistry, तो आप आगे बायोकेमिस्ट्री को पढ़ के आगे आप करियर उसमें बना सकते हैं। आगे रही बात मेडिकल साइंटिस्ट, तो मेडिकल साइंटिस्ट it is estimated by 2026 there will be increased by 13% in terms of US dollar, and you can see that here is like a मेडिकल साइंटिस्ट एवरीथिंग। अब मेडिकल साइंटिस्ट आज के समय में सब लोग जानते हैं कोविड-19 होने के कारण हाउ कोविड-19 इज डूइंग, और डॉक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं और रिसर्चर्स कैसे काम कर रहे हैं। इस समय में वी रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वी आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वी आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ साइंटिस्ट एंड स्पेशली मेडिकल साइंटिस्ट। दे आर आवर वॉरियर, दे आर द फ्रंट फाइटर फॉर दिस पैंडेमिक। सो आप समझिए कि इसमें 13% का अनुमान है, हो सकता है ज्यादा ही हो, आगे चल के इसके डेटा आएंगे, बट दिस इज द डेटा फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, मेडिकल साइंटिस्ट, ठीक है। कल मेरे को कितने दिनों से टेलीफोन आता है कि अगर आपके पास एक लैब है, कोई अगर बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है तो आप मुझे बताइए, मेरे कंपनी में जॉब है, माइक्रोबायोलॉजी का है तो बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि आजकल ये कोविड-19 होने के कारण पहले के समय में लोग they were thinking that there are many engineering, there are many subjects, but now everybody is understanding the importance of life science, basically the biotechnology, bioscience and microbiology. तो आपको बता दें कि आज के समय में, आने वाले समय में there are a lot of scope is coming in this direction. So be prepared for job, be prepared to catch the job. This up to you. Biological and clinical technicians. So it has been estimated by 2026 there will be 13% increase. And you know the biological and clinical technician what they does. Okay, so computer software, automated equipment, many things like biological, and so this all are a interlinked branch of biotechnology. Okay, if you have done like biotechnology, you can go in this direction. Okay, even you can go for advanced robotics, specialized computer software, automated equipment to collect, analyze the model. Fantastic. This is the job of the biotechnology. Process development scientist. Believe you, one day you will have the tag like okay, you will be a scientist. And how? You can go to the lab, you can go to the manufacturing unit, you can develop a method, you can have the many things, you can develop the protocol, standard protocol. And you can have assurance how to measure the quality R&D, whether the R&D is okay or not. You can go to the director of product strategy and commercialization. So what Anjali ma'am was saying about BIRAC, that is the initiative of Department of Biotechnology, Government of India, biological, that is the research how to interconnect. So this is one of the prospect in area of biotechnology, that if you are growing in your career in biotechnology,
then you can be a director in commercialization of your product or marketing, sales, logistics, many things. So there are plenty that you can imagine that starting from the biotechnology, medical scientist, biochemistry, clinical scientist, even for director of product strategy and commercialization. So, but here I just want to to get all this job or prospect, you have to be good training. Good training means good student. आप जितने भी है आपको अच्छे स्टूडेंट रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. ऑलवेज अगर आपसे कोई गलती हो, आप गलती से सीखने की कोशिश कीजिए. हमेशा अपने आई ओपन करके रखिए. ऐसा मत सोचिए कि जो मुझे मैं जानता हूँ चाहे जानती हूँ, दिस इज ओनली द लिमिट. यू ऑलवेज know that something is every day is coming in the news. So that's why keep your eyes open and be prepared to be wrong. कभी कभी क्या होता है कि गलती करके लोगों को लगता है नहीं मैंने गलती कर दिया. No, you need to do the wrong. When you do the wrong thing, you learn the right thing. Okay. So other way, always identify an interesting problem. So कभी भी आप पढ़ते हो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में सोचिए. अगर साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च करना है तो डिजाइन कीजिए एक्सपेरिमेंट को. हमेशा ट्रबल शूटर रहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ट्रबल शूट कीजिए. हमेशा क्रिएटिविटी, हाउ टू थिंक क्रिएटिविटली. आप कोई चीज सोचिए. जैसे आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सोचा है, उसी तरह से ऑलवेज बी क्रिएटिव. ऑलवेज थिंक हाउ टू टीच अदर्स. If you have some lesson, if you have done some mistake and you have realized that that is the mistake, how to improve, and if you can help some other people. And the most important, I always try to say to the people that whatever the education you have, either it's a biotechnology, medical scientist, engineer, your final goal should be how you are going to contribute for the human society. So biotechnology is the biggest gift and the biggest education system where you can direct contribute to the scientific community, for the human welfare. It is a fantastic job because you will be the direct connect with the human, either using the food biotechnology, microbiology, biotechnology, whatever. But you are doing for the human. You are doing for the human welfare. अब पहले के जमाने में आप सोचिए कि जो लोगों को ब्लड टेस्ट कराना होता था शुगर का, then they need to go to the doctors early in the morning, after the breakfast, after the food, you need to go to the evening. But just due to development of all these sciences, now you have the digital device at your home. You just need to use and see that how much blood sugar you have. This is all the gift of biotechnology and biomedical engineering. And this I am always, this slide I like. So this slide is visible for everyone. Can Dr. Piyush? Yeah, visible. Yeah, carry on. Okay, so here you can see that, okay, you can see this is the cartoon that I like this one, okay, and this is the something like cartoon, and like you can see, this is like a normal person is saying that I guess I should not do that. Okay, this is like a cartoon that he can see that, okay, I cannot do this, I give up, I will not do. But if you are some extraordinary person like a researcher or biotechnology person, then you will be thinking in another way. I wonder if that happens every time. Okay, because if it's happen every time, then every time you will learn something. 1 time, 2 time, 3 time, 4 times. So every time you have a new lesson to learn. But the normal person thinks. So always try to be in this direction. Go in this direction. Follow this path. Don't go in this path. Go to a science school, join a good lab, research group, learn a different way of thinking, and always problem solving. Like one example that I always give when I speak, science is not a clinical medicine, like a doctor's. And doctor's medicine is not a science. जो डॉक्टर बनना चाहते हैं 10+2 के बाद, साइंस और ये दोनों नहीं अलग अलग हैं. लेकिन आप देखिए क्लिनिकल मेडिसिन इज नॉट ए साइंस, बट द टू कैन एंड शुड बी इंटरडिपेंडेंट. लेकिन दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है. इन दिस वे आवर साइंस एंड रिसर्च ग्रो. ऑलवेज चूज अ राइट मेंटर. This I am not going to tell you right now. Like you change a mentor when you finish your master. This is after you are making your next career. Like you go for a mentor, go for a scientist. Okay, this is another topic. But here is very important.
if you are training like a student, and if you are going to make a career, then one thing, work hard. Okay. Then everybody say work hard. Work hard, but okay, what does it mean? Because everybody work hard, but not too much. Why I am saying to say, your work hard, because work is equal to force into displacement. So if you are working for something, there should be displacement. Means the work should be not a scalar quantity, it should be the vector quantity. There should be the proper region of working. So in that direction, you have to be make sure that whatever you are studying or working, you should have directional work, not without directional work. In this way, suppose today I am working for biotechnology, and I have invested my career for 5 years. And after 5 years, I change to the another profession. I go to the business, or I went to the railway. Okay, then 5 years for what? So always when you plan for your career, you invest and make sure that you always put some force. There will be some displacement year by year. Then finally your work will be have some final value. Okay, try to be honest. This is like a debate topic. What does this mean? But you, whatever the honest you think, you to try to be honest. Be focused. Always try to be focused for your career, but not blind. Don't be blind. Don't close your eye. Open your eye. Think about your career, and always be directive. So try to go to attend the seminar like what you are doing now. It's always better to interact with people here. Attend seminar in different fields, not only biotechnology. Try to attend engineering, try to social science, because then your knowledge will increase. Generally to be informed, especially in your field. Okay, go for like what is happening outside your state, what is happening outside India. You have to be very curious to knowing all this subject, including in your area, in another area. Talk to others about your work. If you are working, if you are studying, don't hide that, okay, today you have studied something, you must need to talk with your friends or colleagues कि आप क्या पढ़े हैं, उसका मतलब क्या है. ठीक है, टेक्निकल एडवाइस, जितना टेक्निकल एडवाइस आप लोगों से लें, ये मेरे से पूछे, लोगों से पूछे कि मैं अपने करियर में मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन यू टेक, बट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम मेनी पीपल. And how much should you say about your work? When should you say it? It's also very important. This is like a scientific word. I am not going to deal about this. But again, I will say here one thing. If you are starting your biotechnology career here, like suppose if I say that you are here, very fantastic. So you can see there are many arrows that it's coming. Bioinformatics. So computer science, computer engineering, is also linked with the biotechnology. In this time, you can learn many terms like artificial intelligence, machine learning. इतने सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट है. यू कैन गो फॉर मेडिकल डायग्नोसिस. इवन आज के मेडिकल डायग्नोसिस अगर किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में आज के समय में आप समझ लीजिए कि कोविड-19 का ही केस देखिए, कितना प्रॉब्लम हो रहा है इसको डायग्नोसिस करने में. अगर हमारे कंट्री में अच्छे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी रहें तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी. ऐसी नहीं है कि ये कोविड-19 ही लास्ट वायरस है, इसके बाद भी आते रहेंगे. ऐसे पेंडेमिक यही लास्ट नहीं है, पहले भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे. बट वी नीड द बायोटेक्नोलॉजी पीपल इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. तो मेडिकल डायग्नोसिस, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, आप जब बुक पढ़िएगा तो फर्मेंटेशन के बारे में सब लोग जानते हैं. फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का भी डायरेक्ट लिंक बायोटेक्नोलॉजी से है, आप उसमें करियर बना सकते हैं. इम्प्रूवमेंट इन फूड टेक्नोलॉजी, जो अंजलि मैम ने बोला. इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी मैनेजमेंट, आगे देखिए इन्वायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट. आप आज के समय में देखिए कितने पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं. ये आप पॉपुलेशन कम नहीं होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा और हमारे प्लांट कम होंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा. ठीक कौन करेगा? बायोटेक्नोलॉजी. ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है. तो बोलिए, अब कोई बोले कि मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी में जॉब नहीं है. जॉब कैसे नहीं है? आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है. जब इस तरह के फील्ड हैं, जिस तरह के प्रोस्पेक्ट है आगे चल के, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कोप, यू कैन मूव एनीवेयर. बट लेकिन थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा.
थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। टाइम से पहले कोई चीज आती नहीं है। व्हेन द टाइम विल कम एवरीथिंग विल कम। यू कैन गो टू द एनिमल ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर। आप आज के समय में देखिए एग्रीकल्चर, इंडिया इज द एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। हर जगह एग्रीकल्चर फार्मिंग है। आज देखिए कि एग्रीकल्चर लोग लगाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है। इसको कैसे सोल्व करना है? दिस इज अ जॉब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज अ जॉब ऑफ आवर मॉडर्न साइंस। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, हम लोग जितने भी हैं यहाँ, सब लोगों ने 10+2 मेडिकल करके सोचे कि डॉक्टर बने। ओके, दिस इज अ जॉब ऑफ हेल्थ केयर। लेकिन हेल्थ केयर के आगे जो इम्प्रूवमेंट है, बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, नए ड्रग्स आने, आजकल जो नए ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में, कोविड-19 के ये वैक्सीन आ रहे हैं, कोविड-19 के अगेंस्ट में ये ड्रग काम कर रहा है, क्लोरोक्विन करे कि नहीं, हु मेक्स दिस न्यू ड्रग्स? बायोटेक्नोलॉजी। So in healthcare, you can see plenty of jobs are there. Okay, recombinant DNA technology. आप बुक में पढ़िएगा recombinant DNA technology के बारे में तो बहुत कुछ मिलेगा कि ये recombinant DNA technology, this is like a recombinant DNA technology, but this is a direct application of biotechnology. Okay, so recombinant DNA technology करके आप biotechnology, this is the application. Plant agriculture, crop improvement. आजकल के समय में crop को कैसे improve करें ताकि उसका yield ज्यादा हो, this is a job of biotechnology. The modern very interesting topic, that is proteomics and genomics. Proteomics and genomics, this is also a part of biotechnology. You can see there are a cycle of the scope where you want to go. But you have started with one career, that is the biotechnology. When you have started, that is after 10+2. After doing this, you can go anywhere. This is all your area. Nobody can stop you. You can go anywhere. And you can do the excellent in your due to your ability and in your career. As for now, you can go if you are going to the industry. In industry, you can see in the pharmaceuticals 20%, medical lab 15%, biofuels 15%, environmental 15%, food 15%, forensic 10%. So regulatory, even in the government body, our people are there. 10% people are there. Okay. So you can see the plenty of scopes are there. Try to be a good scientist, try to publish some good thing, try to contribute for the society. So I would like to, with this word, I would like to conclude my talk. Thank you very much. If you have any question, feel free to ask me. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for providing these interesting and for encouraging students for the good career in this field and for this motivation that you have given. I hope students will definitely benefit a lot. I do not see any specific question right now, but if they have question, and definitely. Okay. Yeah, because sometimes for a speaker is very difficult, because sometimes when a speaker don't get the question means people don't like, and sometimes if you don't get the question means the people understood everything. So now I am confused what I did. I think they have understood, and some students are shy in our places, but I encourage them to ask questions. अरे आप लोग कोई क्वेश्चन तो पूछिए, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके कुछ पूछिएगा तभी तो बताएंगे। कुछ पूछिए, आप सब लोग को कंफ्यूजन होगा कि हम बायोटेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि वो कैसे अप्लाई करें। इतने सारे इंफॉर्मेशन अंजलि मैम ने भी शेयर किया, तो लोगों का ये है कि हाउ दे विल अप्लाई फॉर द सो मेनी ऑप्शंस। ओके, सो मैं एक बात सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट होते हैं, हमारे यहाँ पहले बचपन में एक कहावत होती है कि एक होता, लोग बोलते थे कि काक चेष्टा, मतलब कि कौवे जैसा सोना, कभी सोना नहीं चाहिए। यू हैव टू बी ऑल द टाइम यू आर वेकअप। वेकअप का मतलब यह है कि हर जगह पे आप अपने अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि किस जगह पे जाना है, क्या करना है। और रही बात, पहले आप अपने को देखिए कि आप आगे करना क्या चाहते हैं, ठीक है।
बस दीपक इज हियर, दीपक, दीपक, नो, संजीव, या दीपक ज्वाइन, दीपक ने है क्या? दीपक इज हियर? Yes, sir. I am here. I am here. ओह वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं Thank जितने you, भी thank you, ऑडियंस, थैंक यू, मैं सबको ऑडियंस को मैं एक बता दूं कि हमारे ग्रुप में यहाँ पे ऑडियंस के रूप में दीपक हैं, ये हमारे जूनियर थे, ठीक है, और मैं आया जेएनयू में एमएससी बायोटेक करने, और दीपक आया लाइफ साइंस। क्या दीपक? Yes, sir. MSc Life Sciences. लाइफ साइंस, और ये भी हमारे वीडियो ऑन कीजिए दीपक, जरा बहुत दिन के बाद हाँ, तो आप सब लोग को बता दें, आप लोग को बता दें कि ये लड़का बहुत शाई था, आप ही लोग जैसा। ये कभी कभी भी कुछ बोलता नहीं था, छोटा सा था, हम लोग के पास आता था, बोलता था सर सर सर, हम कहे दीपक दीपक। और ये लड़का जेएनयू में आया मेरे बाद, ठीक है, जब जेएनयू में आया तो हम लोग की एक दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी, और हम लोग एक ही रूम में रहते थे, तो सीनियर जूनियर का कंसेप्ट नहीं था, और हम लोग CSIR नेट का एग्जाम देने साथ जाते थे। उसके बाद दीपक ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं दीपक की सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि दीपक ने बहुत रातें सोई नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया है अपने कैरियर में, बहुत सारे प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जॉब लिया। उसके बाद आपको मुझे ये बता के इतनी खुशी हो रही है कि नाउ ही बिकम ए फैकल्टी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ओके, सो नाउ यू कैन सी, ये हमारे एग्जाम्पल हैं BN कॉलेज के, जिन्होंने वहीं से बायोटेक्नोलॉजी करके आज हमारे BHU के फैकल्टी बनने जा रहे हैं। सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू दीपक, एंड वी शुड गिव हिम द बिग क्लैप टू हिम। या Thank you, sir. Thank you. तो ये देखिए, कांग्रेचुलेशन, ठीक है, Thank तो you, sir. आप देखिए कि कैसे हम लोग के सितारे चमकते हैं, ठीक है। आप, एक समय था कि जिस समय हम लोग BN कॉलेज में थे तो लगता था कि अब तो कुछ सब दुनिया खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, कहाँ बायोटेक्नोलॉजी कर लिए, तो हम लोग उसके चक्कर में रहते थे कि कब ऑपरन पहन लें तो डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। ऑपरन पहन लेने से डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्योंकि कारण था, क्योंकि आप घर में जाइएगा तो लोग बोलेगा कि आप तो डॉक्टर बनने गए थे, आप तो बायोटेक्नोलॉजी कर लिए, आप क्या करें, कुछ नहीं किए। तो लेकिन आज आप बताइए कि दीपक को कैसा फील होता होगा अभी। ऐसे हमारे बहुत एग्जांपल है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग के क्लास में जब हम लोग जेएनयू में थे, संजीव, या मेरे पास और टाइम है ना, 5 मिनट टाइम है ना? हाँ ठीक है, कंक्लूड। तो हमारे पास जब हम लोग MSc कर रहे थे जेएनयू में, तो जेएनयू में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, और वो लोग क्या करते थे, दीपक यही है, हम लोग को बहुत डराते थे कि पास नहीं करेंगे। और क्या होता था कि अगर ग्रेड में 0.1 कमी हो जाए तो कहते थे बाय बाय, आप घर जाइए, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, ठीक है। आप सोचिए कि अगर BN कॉलेज से आके जेएनयू से निकाले गए तो कितना खराब लगेगा, कहाँ जाइएगा आप तो मेडिकल भी नहीं किए, फिर MSc से भी निकाले गए। तो हमको याद है कि हमारे क्लास में एक केशव गोपाल करके लड़का था जो BHU से आके, और उसके पास देख लीजिए, एक ही शर्ट एक ही पैंट था, और एक ही शर्ट एक ही पैंट, उसने पूरा एक ही शर्ट पैंट में उसने MSc कर लिया, ठीक है। और वो एक ही शर्ट पैंट में करके आज के डेट में, वो एक समय था 2006 में, ही नाउ आज के डेट में वो कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा में साइंटिस्ट है, उसकी वाइफ भी कैनेडियन है, वहां कनाडा में है, उसके बच्चे भी कैनेडियन है। अब यू कैन इमेजिन कैसे लाइफ चेंज होती है। तो आप सोचिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी हम लोग के लिए गिफ्ट है, जिसके कारण हम लोग इतने लोग को कैरियर दिया, इतने लोगों को कहां से कहां पहुंचाया। क्या श्योर, ओके, और कोई कुछ? दीपक, someone is asking, he is doing the MPhil in biotechnology, and what will be his further step? देखिए, अगर आप MPhil बायोटेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि 2-3 ऑप्शन, अगर मैं ये नहीं जानता हूं, अगर MPhil आप कर रहे हैं तो या तो पहला ऑप्शन ये है कि आप PhD करके
इंडिया में फैकल्टी पोजीशन निकलती है, उसको अप्लाई करके जॉब ले लीजिए, या आपके पास CSIR नेट है तो एमफिल के बाद भी इंडिया में जॉब मिल सकती है, या अगर आपको बाहर जाने का मन है तो आप कंटिन्यूअसली बाहर जाने के लिए अप्लाई कीजिए। बाहर में प्लेंटी ऑफ स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का, वहां जाके आप कैरियर बनाइए, या आगे चल के अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो आप इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन कीजिए। I think now we should conclude. Thank you very much. Thank you. Sir, I want to ask some questions. Please. Sir, myself, Anjali, I completed my PhD from BN College, now pursuing Masters in Microbiology from Banaras Hindu University. Sir, what should be the further steps should I next try? Okay, very good question. So you are doing MSc from BHU? Yes, sir. Okay, in biotechnology? No, sir, microbiology. Okay, sorry. You are doing in microbiology. Okay. So the prospect for you, first, I don't know that how you are financially strong. I don't know how you are personally strong. But for you, I will prefer, if possible, continue to finish your PhD. Okay, sir. Is it okay for you, or are you finding difficulty? No, sir, it's side option. ओके, सो आप देखिए MSc के बाद आप जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कीजिएगा आपकी जॉब लग जाएगी इंडिया में, ठीक है? Yes. लेकिन जॉब लग जाएगी, फिर आगे चल के लोग मिलेंगे दीपक जैसे, यहाँ पे है दीपक, वो भी तो, लेकिन दीपक क्या PhD किया रहेगा तो उस समय लगेगा कि मैंने PhD नहीं किया, तो PhD कर लीजिएगा तो फिर आपका थोड़ा करियर अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नो सर, नहीं, थैंक यू। हाँ, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए पढ़ते रहिए, कैरियर देखते रहिए, और अपने आंख को खोल के रखिए। आंखें खोल के रखने का मतलब ये नहीं, अलर्ट रहिए। जी सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेलकम। So once again I will say many thanks to my very good friend Sanjeev to having this so we have very close association with Sanjeev. I don't have what to say. If I'll start talking about Sanjeev I will need another session, so I will not say, but I know that Sanjeev is a very really great person. He always have something new थिंकिंग। एक चीज मैं शेयर करूंगा कि हम लोग को एक प्रोजेक्ट होता था BN कॉलेज में, जिसमें हम लोगों को अपना रिपोर्ट जमा करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि अपना रिपोर्ट 2-3 दिन में बना के सबमिट कर देते थे वीरेंद्र सर को या कुछ भी। संजीव उसको क्रिएटिविटी बनाते बनाते उसमें कभी ताजमहल तो कभी लाल किला उसको 1 महीने में बनाएगा। तो हम लोग कहीं करता क्या है, तब बाद में पता चला कि ये बचपन से ही क्रिएटिव है। तो बाद में पता चला कि संजीव मेड ए संजीवनी फाउंडेशन। Yeah. So it's really great, Sanjeev, that the way that you are doing, God bless you, and we are with you all the time. Anytime you just let me know, we are here to do anything. This is just our duty, and I am very glad to see the way that Dr. Piyush is contributing for our society. Thank you so much, Dr. Piyush, even in he's sitting in US, but working for us. Thank you so much. I can see Dr. Lakshmi Narayan is here. So thank you so much, Dr. Lakshmi Narayan, to supporting our people. Deepak, so thanks so much, Deepak, and everyone, whoever is here. Just be happy, try to be safe, stay home, and take care of yourself, take care of society, and take care of your family and parents. रविंद्र सर, यस बोलो। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए वैभव शर्मा जी का। अब बोलिए वैभव शर्मा जी, बोल। सर, इज इट डिफिकल्ट टू परस्यू PhD विथ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश? हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बिहार में। तो आपको एक बात थोड़ा सा मैं आपको मैं इनको एक चीज बता देता हूँ। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता है। हमारी लैंग्वेज हमारी पहचान है। हम भोजपुरी में बोलेंगे। हमारे देश में अंग्रेज शासन करके चले गए, अंग्रेजी का अभिशाप छोड़ के चले गए, जिसको अभी तक हम लोग ढो रहे हैं।
अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो खास करके हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन नहीं। आप देखिए जापान में जापानीज बोली जाती है, कहाँ उनका डेवलपमेंट है। चाइना देखिए चाइनीज बोलते हैं, इंग्लिश को नहीं फॉलो करते हैं, कितना डेवलपमेंट है। ताइवानीज बोलते हैं, कहाँ डेवलपमेंट है। ब्राजील और ऑल स्पेनिश कंट्री अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, आपस में अपने लोग से अपने भाषा में बात करते हैं, उनकी पीएचडी भी अपने लैंग्वेज में होती है। अच्छे साइंस करते हैं, अच्छे कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे इंडिया में एक कल्चर है, मैं अच्छे से इंग्लिश बोलूंगा तो आप समझिएगा कि थोड़ा मैं ट्रेंड हूं, मैं मेरा ये है, ऐसा नहीं है। बहुत मैं आपको एग्जांपल देगा कि हिंदी में लोग पीएचडी करके बहुत अच्छे अच्छे जगह में हैं, ठीक है। मेरे साथ ही हिंदी से मैं जब आईसीजीबी में जब मैं कर रहा था तो वहां पे एक पीएचडी मेरे साथ थे जो उनका पूरा बैकग्राउंड हिंदी का था, उन्होंने पूरा हिंदी था, लेकिन उनको साइंस समझ में आती थी। उनको डीएनए जो समझते थे वो हम लोगों से अलग समझते थे, जिसके कारण आज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में साइंटिस्ट हैं। हिंदी ही है उनकी, इंग्लिश नहीं है। इसलिए आप घबराइए मत वैभव जी, आप हिंदी से बहुत ऊपर जा सकते हैं। Yeah, sure. We should keep the confidence, and this is our strength to be a success. Yes. दीपक Yes sir, yes sir. अरे अपना कुछ सक्सेस स्टोरी तो बच्चों को बताओ। Yes sir, बस थोड़े दिन का टाइम दीजिए. I am in a shifting stage, so Okay. definitely after 2-3 weeks I will join. मैं तो लगता है मैसेज तो दीपक को मैं छोड़ा हूँ, भूल गए। तो मैसेज तो मुझे नहीं मिला है आपका। नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने छोड़ा है। अच्छा, मैंने नंबर चेंज किया था सर, हम आपको भेज देंगे। हाँ, नंबर है तो दे दीजिएगा। हमको लगता है कि वो हम छोड़ दिए, वही हमको लगा कि नहीं इस ग्रुप भूल गए क्या हम लोग को। नहीं इस ग्रुप से मुझे मैसेज आता है। नहीं ये तो हम देखे थे कि याद होगा कि संजीवनी का मैं जो पहला सेशन स्टार्ट किया तो लगता है इनॉग्रेशन सेशन में आप आए थे। यस सर, आए थे स्टार्टिंग। हाँ, जो सुमति प्लेस बोरिंग रोड चौराहे पे। यस आए थे। तब से तो हम लोग जुड़े हुए हैं और ये है और ठीक है। अब हाँ, एक अच्छा है, सब लोग जुड़ के एक प्लेटफॉर्म अगर इस तरह से क्रिएट कर दिया जाए तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। Sure, ये बच्चों के लिए काफी अच्छा और है। सबसे बड़ा चीज है कि बिहार को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि सभी चीज के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं काम कर रहा। मतलब कहने वाला साइंटिफिक टेम्परामेंट का साइंटिस्ट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी को अगर इसको एलाबोरेट किया जाए तो साइंटिस्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए, जो बच्चों में और पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है, टीचर्स को नहीं पता है, सिस्टम को नहीं पता है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, देन हाउ दे विल गाइड द कमिंग जनरेशन to choose the biotechnology or life sciences for their career. So it is very necessary. True. And this is the main vision and motto of this organization, to establish and to increase or uplift the scientific temperament among the society as well as the students of the Bihar. Very good initiative. तो ये एक चीज है। दूसरा चीज एक बोलना चाहेंगे कि स्किल ट्रांसफर की बात कर रहे थे, तो स्किल ट्रांसफर अगर हम लोग देखें तो पेरेंट्स से अगर किचन की हम बात करते हैं तो कोई डिग्री नहीं लेता है खाने बनाने का, लेकिन एक से एक स्किलफुल हमारे जो लेडीज लोग या जेंट्स लोग जो सीखते हैं पेरेंट्स से, तो ये स्किल ट्रांसफर होता है विदाउट एनी सर्टिफिकेट एंड विदाउट दैट विल ओनली डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क एंड इंटरेस्ट इन दैट थिंग। अगर हम एक छोटा सा चीज देखें कि आज पतंजलि इतना बिजनेस कर रहा है, मैं कल ही गया था फॉर्चून के दुकान पे, तो आंवला का देयर आर सो मेनी ऑप्शन, जूस है, कैंडी है, मुरब्बा है, उसके मेडिसिन हैं, उसके च्यवनप्राश है। और जब मैं घर में लाता हूँ तो लेडीज बोलती है कि वी कैन मेड ऑल दीज थिंग्स। तो ये स्किल हमारे घर में भी है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ हमको अपना इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है, और अगर हम अपना एक भी इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, एक भी, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक फ्रेंड सर्कल में आ रहा है सत्तू, जो हम लोग चना यूज करते हैं, अभी वही चना आ गया है। जिस तरह से हम लोग चाय बनाते हैं, है ना, चाय जो हम लोग रेडीमेड होता है, उसी तरह से एक सत्तू का पैकेट आ गया है एक छोटा सा ग्लास के साथ, और उसको ऑलरेडी उसमें जो सत्तू है वो ऑलरेडी पैकेट में है, एक ग्लास है, उसमें नींबू और थोड़ा मसाला है। अब कोई भी आदमी ट्रेन पे है, कुछ भी है,
आराम से आप सत्तू पी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत चीज सोचा जा सकता है। आने वाले समय में और कुछ मैं शेयर करूंगा इस चीज से रिलेटेड। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। मशरूम का आप देखिए, तो जैसे आप बता रहे थे कि मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहता है, तो मास्टर्ड में जो लक्ष्मी जुड़े हुए हैं तो जानते होंगे कि मास्टर्ड में मैंने वहाँ पे एक पूरा एक फेयर लगाया था, और उसमें मैंने मशरूम का पकौड़ा, मशरूम का चाट, मशरूम का मोमो, मशरूम का भुजिया, सब कुछ मैंने वहाँ पे स्टॉल लगाया था। और हमको पूरा ताज्जुब हुआ था कि 2 घंटे में हमारा पूरा दिन भर का सेल हो जाता था। एंड दैट इज द मॉडल फॉर द फार्मर ऑफ द सिलीगुड़ी। एंड वो एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ, और वहाँ पे लोग किसान जो हैं जो अपना मशरूम को बेच नहीं पा रहे थे, एंड दे हैव सर्च्ड सो मेनी ऑप्शंस आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मशरूम। तो अभी उसके बाद जब बिहार में आए तो कुछ नहीं था, लेकिन आज देखिए वही मशरूम का और मोमोज बना के लोग, कितना लोग उसमें जॉब कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन दिस फील्ड आल्सो एज ए एंटरप्रेन्योर आल्सो। So I think we should conclude all these things. Thank Dr. you. Piyush? Yes, sir. Now we can conclude the session. We have already discussed so many applications, and the thing is that we should be observant. The students should be observant about opportunities and creativity and innovation, and definitely they will meet with success. So with this, we will thank both our speakers today, Dr. Anjali and Dr. Ramendra, and we'll come back on next Sunday with a next set of speakers. So thank you everyone for joining. We have shared the link for feedback form. Please give us your feedback. Next speaker will be probably our topmost senior from first batch of the BN college, Dr. Dheeraj from Birak. Yes, Dr. Dheeraj will be joining us. So yes, it will be a very awaited session. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Have a great day. Thank you. Thank you. Thank you.